Hi, good morning, friends. I welcome all of you to this live and interactive session of live market analysis and momentum trading system brought to you by Upstox Securities. My name is Amit Goel. I'm a SEBI registered research analyst and a chartered market technician, and I shall be leading this session for all of you. ये जो सेशन है ये इंग्लिश में रखेंगे, ज़्यादा हिंदी और कम इंग्लिश में बात करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पार्टिसिपेंट्स, हमारे दोस्तों को ये चीज़ समझ में आए और इसको बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव रखने की कोशिश करते हैं। क्या हम यहाँ पर कोई ट्रेड्स देने वाले हैं? उसका जवाब है नहीं। हम यहाँ पे कोई ट्रेडिंग टिप्स या कोई ट्रेड सर्विसेज या ट्रेड कॉल्स का काम नहीं कर रहे हैं। हम बेसिकली एक टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा ब्रॉड मार्केट को जैसे आपकी ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस हुए, निफ्टी, बैंक निफ्टी और एनी अदर मेजर इंडाइसिस को किस तरह से हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, उससे एक मार्केट का रुझान, मार्केट का व्यू पॉइंट क्या बना सकते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। एंड उसके अलावा क्योंकि 1 घंटे का सेशन है तो करीब आधी घंटे तक हम लोग लाइव मार्केट एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम 2-3 चीजें देखेंगे। ब्रॉड मार्केट एनालिसिस एंड मूवर्स एंड शेकर्स, जो ज्यादा मूव हो रहे हैं वो कौन से मोमेंटम में है स्टॉक्स, वो देखेंगे, समझेंगे किस तरह से इनको आइडेंटिफाई करते हैं। अगेन कोई ट्रेडिंग टिप्स वगैरह कुछ भी नहीं देने वाले यहाँ पर, सिर्फ एक प्रोसेस समझेंगे जिससे आप अपनी ट्रेडिंग सुधार सकते हैं, आप अपना खुद का एक ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं। इसके अलावा हम लोग सेकेंड हाफ में द रिमेनिंग 30 मिनट्स हम लोग एक मोमेंटम ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर काम करेंगे। वी विल ट्राई एंड क्रिएट मोमेंटम ट्रेडिंग सिस्टम यूजिंग सर्टन इंडिकेटर्स। ठीक है, एक इंडिकेटर बेस्ड मोमेंटम ट्रेडिंग सिस्टम बनाने का एक प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में हम लोग ये सेशन आज लेने वाले हैं। आई होप आप लोगों को मजा आएगा। देखिए, क्वेश्चन बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो सीरीज़ है मेरे साथ हर हफ्ते में हम लोग एक दिन आने की कोशिश करते हैं और आपके डाउट्स, टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से यूज़ करते हैं, आपके ट्रेडिंग सिस्टम्स के बारे में कोई डाउट्स हो, कोई तकलीफ हो तो वो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स के ऊपर कोई डाउट्स या क्लैरिफिकेशन हो वो आप कर सकते हैं। मगर प्लीज आप कोई ट्रेडिंग टिप्स या कोई स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में व्यू ना पूछें कि एबीसी स्टॉक मेरे को क्या लग रहा है, मैंने ये लिया था और यहाँ से ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा या क्या सेटअप है। वो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होगा, बिकॉज हमको सेबी के दायरे में, सेबी के रेगुलेशंस के दायरे में काम करना होता है। ठीक है, तो ब्रॉड मार्केट के बारे में बात करेंगे, मोमेंटम ट्रेडिंग सिस्टम किस तरह से बनाते हैं, उसको किस तरह से यूज करते हैं, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। आई होप एवरीबडी इज गियर्ड अप। चलिए, मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। आई होप सबको स्क्रीन दिख रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी लोग आए हुए हैं आज, एंड आई एम हैप्पी कि आप लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ते जा रहा है एवरी वीक। एंड आई होप कि ये एक आपके लिए रेगुलर फीचर बन जाए, जिसमें आप लोग मार्केट के बारे में समझें, मार्केट के बारे में सीखें और इसको हम एक रेगुलर फीचर हर हफ्ते का बना पाए। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूँ बिफोर आई स्टार्ट द एक्चुअल एनालिसिस। परफेक्ट। तो सो वी आर लुकिंग एट द निफ्टी चार्ट। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी हैज बीन इन दिस ब्रॉड रेंज ऑफ 25,300 ऑन द डाउन साइड एंड 26,100 ऑन द अपसाइड। ठीक है, प्राइमरी ट्रेंड, क्योंकि आप देख सकते हैं द प्राइमरी ट्रेंड इन निफ्टी इज क्लियरली अप। मैं कुछ यहाँ पे जो मेरे इंडिकेशन से एनोटेशंस हैं, एक बार मैं उनको हाइड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी आ जाए।
एंड ये वॉल्यूम डेटा भी हाइड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब लेट मी पिक अप माय पेन। अनिल त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं सर इंट्राडे, अमित इंट्राडे स्टॉक पिक कैसे कर सकते हैं? उसके बारे में लास्ट के 10 मिनट में, मतलब द फर्स्ट हाफ में, मतलब लेट्स से अबाउट 12:20 12:25, उसके बारे में भी हम लोग एक क्विकली देख लेते हैं कि किस तरह से इंट्राडे में हम लोग कोई मोमेंटम कहाँ पे हो रहा है, मार्केट में हलचल कहाँ पे हो रही है, उसके बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आप देखें तो मार्केट जो है ब्रॉडली स्पीकिंग एक हायर हाई हायर लो बना रहा है। हाई, हायर हाई, हायर हाई, ठीक है, लो, हायर लो, हायर लो, राइट। सो अगर मैं आपसे पूछूं टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? हम लोग फाइंड आउट करते हैं ब्रॉड ट्रेंड क्या है, और ये डेली चार्ट है, ठीक है ना, दिस इज द डेली चार्ट। ब्रॉड ट्रेंड इज अप ट्रेंड, ओके, अप ट्रेंड है। नाउ इज द मार्केट मेकिंग अ न्यू हाई? द आंसर इज नो, द मार्केट इज बिटवीन द प्रायर हाई एंड द प्रायर लो, ठीक है। तो ये एक दो पिवट के बीच में मार्केट मंडरा रहा है, राइट। सो व्हाट इज दिस प्रायर पिवट? द प्रायर पिवट इज अराउंड 25,300, okay, and 26,100. So broadly speaking, market is in this range and we are at the upper end of that range, ठीक है। Since the trend is up and the market is trying to make trying to break through the ceiling, so the assumption or the inference here is we should eventually move up, ठीक है, we should eventually move up, trying to make inverse head and shoulders. Prakash ji, let me check that. I don't see it is making an inverse head and shoulders on this time frame at least, but let me see if there is any veracity to it on a higher time frame. आप अगर time frame बता दें प्रकाश जी तो मैं उसको भी check कर लूंगा। तो the primary inference is निफ्टी ना इवेंचुअली ये लेवल को तोड़ के ऊपर जाने की तैयारी में है, इन माय ओपिनियन, राइट, बिकॉज ऑफ द चार्ट रीडिंग दैट आई हैव बीन डूइंग, ठीक है। अगर आप ट्रेंड देखें, मूविंग एवरेज का जो ट्रेंड देखें, विच इज मोर इनसेंसिटिव टू द एवरीडे वोलेटिलिटी, वो भी ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहा है, ठीक है, एंड मार्केट इज ऑल्सो ट्राइंग टू मेक हायर हाई हायर लोस, नंबर वन। सेकेंड, इफ यू लुक एट दिस प्रायर रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन, राइट, व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग इज यहां पर एक बार टच किया था, यहां पे एक अच्छा खासा रिजेक्शन आया एंड देन इट मेड दिस ट्रायंगल फॉर्मेशन, राइट, इट मेड दिस ट्रायंगल फॉर्मेशन। यहां पर क्या किया उसने? ब्रेकआउट दिया। दिस इज क्लासिक टेक्निकल एनालिसिस, राइट, ब्रेकआउट दिया, देन रिट्रेसमेंट, ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, right, this is that retracement. So this is your breakout, this is your retracement. Are we clear? So what is market trying to do? Market is trying to follow a very clean technical pattern known as a triangle breakout and a retracement. So in this kind of a scenario, typically what happens is once you get a retest and a very smart retest over here, you are eventually bound to post a new high. You will eventually post a new high, correct? So in this kind of a technical setup, you will look to buy the dip at, not every dip, not every fall, buy the dip at prominent support levels, correct? You will have to find out what are the prominent support levels and you should be prepared to buy if at all market comes there. We can all see that there is a gap level here, right? And you can also see the moving average converging in this gap level. So this area seems to be a good prominent support level. So if market gives a reaction again
from the highs of 26,000, 26,100, comes down to this area of prominent support, we should be interested in this area. So in the entire chart pattern, this is where I am interested in, or rather this is the only area which looks to be of some interest for buyers. यहाँ पर कुछ pending buying orders अभी भी pending दिख रहे हैं. So any dip towards this should be of interest for all people who are interested in going long in this underlying. Okay. चलो, now I will answer some of the questions which happen to be nice. I like this. मतलब काफी सारा questions हैं, तो it makes the session very interactive. So let me see that. क्या बता रहे हैं? So Nifty trying to make inverse head and shoulder. प्रकाश जी, डे टाइम एट टॉप ये वाला आप बोल रहे हो? ये छोटा सा, ये शोल्डर एक बन गया, ये हेड बन गया. Is this what you're trying to say, प्रकाश जी? It could be, but head and shoulders is a chart pattern. A chart pattern is made up of multiple candlesticks, and this shoulder, okay, this seemingly what it looks like a shoulder is made up of a very few numbers of candles. But still, from a visual perspective, this does look like a head and shoulders, inverse head and shoulders in the making. And what is the inverse head and shoulders inference from a technical standpoint? It is also bullish, right? Notwithstanding what is happening fundamentally in terms of what is happening with the geopolitical scenario, the international trade deals and all that, or the tariff scenario, pattern on the chart looks like that we are poised to go up. See, every dip is getting bought into. However, we are also facing resistances around 21,000, 21,100. So if the broader pattern looks like it is trying to go up and we are facing a resistance, eventually that resistance will give away and give us a fresh breakout. So any dip should be bought into, any breakout should be played into. So broadly speaking, the charts look poised for growth on the upside. So Rajat ji, as I've told you, मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग टिप्स वगैरह नहीं मिलते हैं सर. यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से करते हैं, चार्ट ट्रेडिंग किस तरह से करते हैं, उसके बारे में, और एक कोई थियोरेटिकल टॉपिक जो आपके ट्रेडिंग सिस्टम्स में मदद करे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और बात करते हैं. ठीक है. तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई ट्रेडिंग सिस्टम, कोई ट्रेडिंग टिप्स वगैरह नहीं दी जाती है. सो थोड़ा आप इस पे ध्यान दीजिए, तो आप खुद ही अपने trading ideas निकाल पाएंगे. Okay. Now let me read through the other questions. Madhumanchi says Nifty 50 today will touch 26,100. Let's hope, Madhumanchi, you have been buying and you have helped us all reach 26,100. We'll all be very happy and glad that it does. So, and we will have you to thank on that. Now, 26,000 PE trade, good or bad? So again, I cannot comment on a specific trade. I'm sorry for that, Rajiv ji. So trying to make, yes, market also taken retracement area of Fibonacci. All right. So what our friend is trying to tell, ki if this is the current level, so you can all see. I will just zoom this and hide a few numbers for you so that you are able to understand what he's trying to say. Okay. So what our friend is trying to tell is that if this was the entire move from the latest pivot, notwithstanding this one, if this was the entire move, market has taken a support at the 50% of the Fibonacci level. That means it has retraced 50% of the entire move. Okay. मतलब कैसा है? 2 step forward, 1 step back, again 2 step forward. That is how you will have markets functioning. ठीक है. तो ये जो लेवल था, ये प्रायर रेजिस्टेंस लेवल को भी टेस्ट किया. सो एसेंशियली द स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट, द स्ट्रक्चर इज फेयरली बुलिश. तो अगर मैं इसको एक और, इफ आई वांट टू गो वन स्टेप अहेड, हु वाज दैट? शैडो ऑफ मार्केट, इंटरेस्टिंग नेम. So a person with the username shadow of market has given this insight. So what I will do is let's try and project this in the future, and we will use this Fibonacci extension tool. ठीक है ना? When we do this Fibonacci extension tool, it says
that if this was the prior one move and it has retraced here, the next one move will be typically around 26,800. मतलब अगर ये पूरा मूव यहाँ पे रिट्रेस करके फॉलो थ्रू करता है, if this pattern has to follow, right, the next one full move as per this prior one full move would be 26, the target would be 26,800 के आसपास. मतलब वो eventually ये move completion करीब 26,850 के आसपास हो सकता है, is what a Fibonacci analyst would tell, which is essentially about 800 points from the current level, or about 3.5% on the broad indices, which is not a bad move. मतलब अगर आप ब्रेकआउट भी सोच रहे हो, अगर आप फिबोनाची एक्सटेंशन भी कर रहे हो, अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी देख रहे हो, चार्ट पैटर्न देख रहे हो, multiple factors point towards a bullish setup in the making. So any dips intraday, any dips during the next few sessions towards our identified gap levels should be an opportunity for us to consider this bullish inference of ours. Are we clear? Any doubts so far in this before I move on? So Anil ji, again I said I will not be able to comment on a specific trade. Sure, विशाल जी, I can do that. आप इंडेक्स के चार्ट्स पूछेंगे, मैं डेफिनेटली देख के बता सकता हूँ. निफ्टी का हम लोगों ने देख लिया है. Another 15 more minutes for us to do analysis here. तो मैं बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ अभी. ना अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी ने क्या किया था, इट हैड अ सिमिलर पैटर्न. ठीक है, ये आप अगर फ्रेश मूव देखते हैं, लेट्स सी व्हाट बैंक निफ्टी डिड. ठीक है ना, ये आपका प्रायर मूव था. बैंक निफ्टी took a resistance, took a support from the 61% fall. ठीक है ना, मतलब बैंक निफ्टी was stronger. देखिए बहुत सिंपल है, एनालिसिस किस तरह से करते हैं. अगर आप फिबोनाची एनालिसिस करते हैं तो 61% या 23% जिसको बोलते हैं, अगर आप रिवर्स करते हैं चार्ट को या फिबोनाची को रिवर्स करते हैं, तो विच इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू. क्विकली दिखाता हूँ. ठीक है, अगर मैंने रिवर्स कर दिया तो ये 26% के आसपास आ जाता है, और अगर मैंने इसको सीधा कर दिया करीब 76 एंड 61% के बीच में. तो इन दिस एरिया 50% के अंदर का अगर रिट्रेसमेंट करके मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, द प्रायर ट्रेंड इज इंटैक्ट. दैट इज द फर्स्ट इन्फ्रेंस. ठीक है, एंड अराउंड दीज इन एरियाज ऑफ इंटरेस्ट जैसे 61%, 76%, 50% के आसपास अगर आपको कोई प्रोमिनेंट सपोर्ट एरिया या प्रोमिनेंट रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंसेस, इन रिट्रेसमेंट्स प्रोमिनेंट सपोर्ट एरिया मिल रहा है, तो आपको इंटरेस्ट दिखाना चाहिए वहां पर इफ द मार्केट कम्स देयर. ठीक है ना, तो जैसे बैंक निफ्टी में क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पर एक गैप लेवल था, गैप लेवल को फेदर टच किया, and because bank nifty was stronger as compared to the two major indices that we all follow, bank nifty has punched a new high and is trying to move up further, right? Will nifty also follow through? See, the major component of nifty is bank nifty. ठीक है, because ICICI बैंक, HDFC बैंक, Axis, SBI ये सारे जो बैंक निफ्टी वाले components हैं, they are major constituents of Nifty 50. So अगर बैंक निफ्टी has already punched a new high, Nifty will eventually most likely follow through. So the setup, in my opinion, in my mind, seems to be that of a bullish setup in the market, notwithstanding the intraday noise or the daily noise that keeps happening. Right? Bank Nifty has broken through this resistance. Now Bank Nifty is in a all-time high kind of a pattern. अगर आप monthly chart देखें, strong bullish candles in the last 3 months from a reversal of this level 53,600 के level से अच्छा खासा resistance reversal दिखा के we are punching a new high with a strong bullish candle. So no reason why we will not continue it, because the trend remains intact. आप देखें अच्छे से retracement देते हैं, then we tend to move up. Now what we need to understand is whether Bank Nifty's momentum is overbought or not. उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो मोमेंटम इंडिकेटर्स चेक करते हैं, बॉलिंजर बैंड्स देखते हैं एंड RSI देखते हैं ऑन हायर टाइम फ्रेम्स. बॉलिंजर बैंड्स में बैंक निफ्टी हैज बीन वॉकिंग द अपर बैंड एंड द मीन on the monthly time frame for a very long period of time, and it continues to do so. Number one. Second, RSI, there is no negative divergence as such. RSI at 68 on the monthly time frame
is also giving us a little comfort in the fact that there is still more room to go up. So बैंक निफ्टी का चाल क्या है, ये दोनों लाइंस के बीच में बैंक निफ्टी चलते रहता है, राइट? तो बैंक निफ्टी में कभी भी अगर नीचे की तरफ डिप आता है, दिस मंथली मीन ऑफ 20 पीरियड मूविंग एवरेज seems to be a very strong area for bank nifty to go long. So अगर आप tactical calls लेते हो, अगर आप you know 6 महीना या साल भर का कोई अगर ट्रेडिंग कॉल लेना चाहते हो फ्रॉम अ पोजिशनल परस्पेक्टिव इन बैंक निफ्टी, दिस चार्ट इज फेयरली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. दिस इज द कोविड का जो फॉल था, दिस इज एन एबरेशन. बट उसके बाद अगर आप देखें, वंस वी वेंट बैक इनटू दिस जोन बिटवीन द अपर बैंड एंड द मीन ऑफ द मंथली बैंड्स, वी हैव टेंडेड टू function in this manner. तो we have been in a clean predictable trajectory. तो जितना clean chart होगा उतना हमारे लिए trade calls लेना आसान होगा. So how do you trade this? How do you invest in this? Simple. You can continue to do your SIPs and everything at every point in time because SIPs में कोई issue नहीं है. You can continue doing them. But अगर आप थोड़ा smart investor करना चाहते हो या आप थोड़ा tactical calls your time करना चाहते हो, तो the ideal time for you to take positional bets on bank nifty is when bank nifty is seen around the mean of the monthly bands. This is a very clean inference. Now on the weekly time frame, again 67-68 RSI gives us a little comfort, gives us comfort that the bank nifty is not overheated territory. On the daily time frame, you can see that daily में थोड़ा सा हमारे को यहाँ पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस जरूर दिख रहा है. However, broader momentum is still strong. So daily में intraday volatility या daily volatility में if we find any dips, okay, any dips because of some bit of profit booking or something of that nature, हम लोग इसको सोच सकते हैं कि भाई अगर कोई भी लोअर लेवल के सपोर्ट पे आता है, we should be interested buyers. So essentially my opinion, looking at the charts broadly speaking, is that we should head higher in the broad markets. Okay, are we clear with this? Let me see the questions before I move on to the next topic. Vishal said Nifty Auto भी देख लेते हैं सर एक बार. Let's see Nifty Auto. Now Nifty Auto मैं higher time frame के chart पे देखता हूँ. Okay, just a small pro tip sort of a thing. Whenever you are looking at the monthly chart, ठीक है, this is the Nifty Auto chart, correct? मैंने ये पहले भी बताया है. Whenever you look at this kind of a chart on a higher time frame, these kind of charts you will see कि अच्छा कोविड के बाद तो बहुत रॉकेट की तरह गया और बहुत शार्प गिरा. Agreed. Visually this is misleading. Why? Because of this simple fact. I think I have already explained this to you, but let me just take this opportunity again. So this is your 100%. 2000 से 4000, करेक्ट? अगर मेरे को 4000 से 100% मूव करना है तो मेरा ये 100% होता है. Now visually speaking, these two are actually the same percent moves. ठीक है, अभी मेरे को 8000 से अगर 16000 करना है, which is double, right? Now the thing is, when you notice, this is a 100% move, this is a 100% move, so is this, right? This is a normal chart, this is a regular chart. Regular chart में when you look at a higher time frame like monthly, you will find this kind of the recent moves tend to get expanded, to get magnified, right? क्योंकि क्या होता है, ये जो boxes है ना, these boxes, these are of specific 2000 points. ठीक है, मतलब ये निफ्टी का जो चार्ट है, निफ्टी ऑटो का, ये स्पेसिफिक 2000 पॉइंट्स का बन रहा है, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज एवरी 2000 पॉइंट इज नॉट द सेम. यहाँ पर 2000 पॉइंट इज 100%, यहाँ पर 2000 पॉइंट इज जस्ट 10% और 20%. सो फ्रॉम a better understanding, what you need to do is, instead of looking at the regular chart, especially when you are looking at, these are for positional traders, not really for intraday traders, उनको कोई मतलब नहीं इससे. बट अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, आपको रेगुलर चार्ट के बदले लॉगरिथमिक चार्ट करना चाहिए. अब लॉगरिथमिक चार्ट में क्या होता है, नाउ these boxes
are equal percent. Every box is equal percent. Okay, so now every candle, now if you notice that this is the actual auto movement in percentage terms. ठीक है ना, अब आपका निफ्टी ऑटो का मंथली चार्ट दिख रहा है परसेंटेज टर्म्स में. तो अब जो आपका ये वाला जो रिसेंट मूव है ना, नो इट इज नॉट दैट बिग एज कंपेयर टू ये वाला मूव. Okay, which I will prove it to you. How can I prove that to you? Let me quickly show this to you guys. See, how can we check that? यहाँ का टॉप था, ये बॉटम बनाया, which is 61%. This is 2008 का फॉल. यहाँ का टॉप था और ये एक recent लो बनाया 63%, which is your COVID fall. What was the recent fall here? It is half of it. Can you see? 60%, 60%, 30%, right? The recent fall is actually 30% from the top, while in itself is a big fall, but comparatively it is a smaller fall as compared to the prior two falls in auto sector. But if I were to check the regular chart, look at this. Because the base number is so small, the 61% fall gets hidden in plain sight. ये 61% का fall is getting hidden. ये 61% का fall looks decent, but this 30% fall looks the biggest. Why? Because we are actually looking at a simple regular chart. तो ये आपको थोड़ा visually, especially when you're doing broader time frame, higher time frame analysis, you need to be aware of this fact. I hope this was informative and educative for all of you. Now let me quickly check this chart and then move on to the next topics. Right. So broadly speaking, on a monthly chart, Nifty Auto has made a fresh all-time high, and it shows a lot of momentum. Let me check whether it is overbought or not. It was overbought in the early part of in the mid part of last year. From there, we did see a 30% fall. Right now, while it is at 72%, it seems to be a little overbought with a little bit of a negative divergence. So what we can do is we can wait for any dips. Any dips give us good opportunity to enter into fresh longs here, right? Now, if I look at the weekly chart mein, the bands are opening on the upside, and the RSI is also not pointing towards any overheat signals. Okay, so any dip, now you can see that there is a nice looking gap here. There is a nice looking gap in this area. Okay, so maybe any fall towards that could be a good opportunity to create fresh longs in auto sector. From a daily perspective, again, while the primary trend is still intact and on the upside, we have been moving in this channel, right? We have been moving in this broad channel from let's say from the early part of September. So September, October, करीब 2.5 महीना से after that GST का जो एक announcement आया था, GST announcement came here 18th August. Okay, this candle, this gap, ये जो prior एक range था उसको मोदी जी ने announcement कर दिया कि भाई हमारा ये GST rationalization होएगा. तो यहाँ जो था ना prior channel, उसको एक breakout दिया, retest किया, ठीक है, and ये यहाँ से बढ़ा है. So this entire GST move culminated around mid of September. ठीक है, उसके बाद market has been in this sideways trajectory. Now auto sector results have also come through. ठीक है, everything is over. We are moving in this channel. Broadly speaking, the trends are all good. We want we want fresh triggers. ठीक है ना, we want fresh triggers to cause a break out of this channel. तो ये channel break करने के लिए auto sector needs fresh triggers. Rather, the entire market needs fresh triggers to break out of its consolidation. The broad market itself is in a consolidation range. So the components will also, but naturally, kind of show similar sentiments. तो इसमें भी अभी एक consolidation range चल रहा है.
सो हम लोग इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, हम लोग इसको कैसे फायदा उठा सकते हैं? तो सिंपल है, इट इज इन दिस डिफाइंड रेंज। सो रेंज के नीचे आता है तो हम लोगों को इफ वी आर लुकिंग एट द प्रायर ट्रेंड विच इज अप, any dips towards the bottom of this range should be an opportunity for us to initiate fresh longs. And from a trader's perspective, you look to book profits when it touches the upper band of this channel. And anybody who is looking to trade the breakout will not do this, but wait for a eventual breakout of this channel with strong volumes, and take fresh positions there. Essentially, the indices that we have looked at, Nifty, Bank Nifty, and Auto, all three point towards impending bullishness in the market. Right, let me see some more questions before I move on. So Shubham ji, I have given Nifty resistance and support. Broadly speaking, ये इंट्राडे वाला रेंज नहीं है, आपका मोटा मोटी अगर आप सपोर्ट देखो तो इट इज अराउंड 25,300, ये पिवट, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस तो बहुत क्लियरली मार्क्ड है, एंड वी आर क्लोजर टू द रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड इवेंचुअली अपना इन्फ्रेंस ये है कि द मार्केट शुड ब्रेक थ्रू द रेजिस्टेंस. राइट, रवि तवाटे सेज सर हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड. रवि जी, सिंपल ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का बहुत सिंपल एक तरीका होता है प्राइस एक्शन के उस पे, मतलब लुकिंग एट द प्राइस एक्शन, लुकिंग एट द चार्ट, यू शुड सी दिस काइंड ऑफ हैपनिंग, राइट. ये लो है, हायर लो है, ये हाई है, हायर हाई है, ठीक है. करंट मार्केट प्राइस कैन बी एनीवेयर इन बिटवीन हियर. एसेंशियली अगर आपको ये स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है, विच इज लाइक दिस, राइट, तो आपका ट्रेंड ऊपर है. अगर इफ यू फाइंड दिस काइंड ऑफ अ पैटर्न, राइट, what is this happening? This is high, lower high, lower high. This is low, lower low, lower low. This is a downtrend. So trend identification is this. बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ. If you find mixed signals, equal high, equal low, sideways market है, ठीक है. If the trend, if these kind of pivot points जिसको बोलते हैं, if this is clearly visible on the chart, right, you will have an identification of trend. And where do you find the trend? Essentially on the execution time frame or one time frame higher. मतलब अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, आप डेली या वीकली पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करोगे. अगर आप इंट्राडे कर रहे हो एंड यू आर ट्रेडिंग द 5 और 15 मिनट चार्ट, you will look at the 30 minute or a hourly chart to identify the broad trend of the market. Again, these are all guidelines, okay? मतलब ऐसा कोई strict rule नहीं है. These are broad guidelines which I am sharing with all of you. Okay, now Anil ji, again, I will not be able to support you in your individual stock option questions. I am very, very sorry for that. But broadly speaking, if you have bought an option, okay, a call option or a put option, considering that it will move in that intended direction, and if the stock has not moved, or if on account of theta or vega compression, your premium has lost a lot of value, right, you should first, from a normal options trading perspective, you should never average those options. Second, you should always have a rupee stop loss, ठीक है. तो अगर वो रुपी स्टॉप लॉस में आपको मालूम पड़ता है कि भाई आपने 10 रुपए में खरीदा, आप ये बोलोगे भाई मेरा 5 रुपए का हार्ड स्टॉप है, या तो मैं 15 रुपया बनाऊंगा या 20 रुपया बनाऊंगा. इफ इट इज अ 2:1 रेशियो, लेट मी पुट दिस इन राइटिंग हियर. लेट्स से यू बाय at 10 rupees, okay, you will have a rupee stop loss of, let's say, 5 rupees, okay, and you will have a target. Let's say if it is a 1:1, you will have a 15 rupees target. If it is a 2:1 trade, whatever your trading system is, you will have a 20 rupees ka target, correct? Simple. So now if in a trader's example, agar aapne kuch buy kiya, whether call or put, if this decays to this way on account of let's say price
not moving in your direction. This could be first reason कि भाई आपने कॉल बाय किया, प्राइस उल्टा चला गया या साइडवेज चला गया. सेकंड, थीटा डीके, थीटा स्लैश वेगा डीके, for whatever reasons. Okay, when you buy options, you are not only you want the price to move in your direction, okay, and you want the price to move in your direction at the earliest. ये दोनों conditions fulfill होनी चाहिए, तब you make money in option buying. Okay, now for whatever these, whichever the reason is, if your prices come here, never average option buying. Never do that. Okay, never do that. Okay, because it is not a linear product, it is a non-linear product. थीटा डीके का कर्व जो है ना वो ऐसा होता है, सडन डिप आ जाता है. सो as you come closer to expiry, बहुत sharp depreciation होता है of the theta component or the time value component of the premiums. So never average your option buying. Okay, option selling में there is a different concept, but option buying में कभी नहीं करने का averaging, and you should have a rupee stop loss, very strict rupee stop loss. Okay, so I hope this is good enough for you to understand what needs to be done as an options trader. Okay, now let's move ahead and see more questions, and then we will move to the lesson topic. I think now market will not wait for trade deal and it will take it as granted and move upwards faster than expected. Quite possible, na? Looking at the price action in the market, any dip is getting bought into very nicely, right? Intraday में आपको negative दिखता है, but अगले दिन या during the day itself अच्छा खासा movement ऊपर की तरफ आ जाता है, which leads me to believe, and the price action is also very clear that it is likely to, the market is trying to move up only, और थोड़ा भी अगर साथ दिया sentiments ने, तो it will, I'm sure, go up nicely. So Vardhaman Bedmota, individual stock charts we will not be checking. Okay. Now we have taken enough time for doing live market analysis and answering your questions. Let me now move to another topic, which is momentum trading systems. Okay. Whenever you want to set up a momentum trading system, what are the things that you will look for? What are the things that you will look for? Okay. The things that you will look for are certain indicators. Now, when I say indicators, how many types of indicators are there? ठीक है, in the market, technical indicators में बहुत सारे type के indicators हैं. What are those indicators? The first indicator, the first group of indicators are called as trend following indicators. ठीक है. Second is momentum indicators. Third is volatility indicators. Fourth is volume based indicators. All right. Now, can we get some examples of these indicators? क्या हम कुछ examples ले सकते हैं indicators के? Trend, momentum, volatility, and volume. So now when you say trend following indicators, your moving average, super trend, okay, your ADX, DMI, DMI plus, DMI minus, okay, these are some of your Ichimoku. These are your some of the common trend following indicators. Okay, now which are your momentum following indicators? Your MACD. Okay, MACD actually is a hybrid indicator, it comes both places. Okay, your RSI. Okay, these are very popular momentum based indicators. When I speak of volatility based indicators, what are those? All your bands. Bands में कौन से होंगे?
बॉलिंजर, ठीक है, डॉन्चियन, Keltner and other bands, right? Then you will have your, which is the other one? ATR, true range, right? Volatility bands. These are all your, and momentum में stochastics भी आएगा. And some more. I'm just giving you the more popular ones and that I can just recall of the cuff. Volatility bands. Now volume based indicators में कौन सा है? Your volume itself is an indicator. जो नीचे bands आते हैं, bars आते हैं, ठीक है? Your on balance volume, right? Etc. etc. You will have your profiles. Intraday में profiles आते हैं, and then you will also have VWAP. Right? These are some of your volume based indicators. Now see, I'll give you a quick simple lesson on or rather my understanding, मेरा भी understanding नहीं, broadly speaking, this is how the market functions, this is how technical analysis is to be looked at. When you look at the market from a technical analyst's perspective, there are a couple of factors that you will look at, broadly speaking. First, you will look at price action. Okay, how will you look at price action? First is chart pattern. Then you will have candlestick pattern. Okay, chart patterns are broad trend, forming patterns. Like, what are they? Cup and handle, head and shoulders, flags, pennants, essentially, etc., etc., rectangles, etc., etc. What these do, chart patterns, is you use multiple candles to form a broad pattern. ठीक है ना? And candlestick patterns are basically your hammer, shooting star. Then you have your engulfs, right? Your demand zones and supply zones. These are all basically hammers and then hanging man, etc., etc. So what these are, chart patterns are basically known as continuation patterns, and candlestick patterns are known as reversal patterns. ठीक है? ब्रॉडली क्या है, चार्ट पैटर्न्स आपको दिखेगा कि भाई ओके एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है, हेड एंड शोल्डर्स, कप एंड हैंडल, फ्लैग, पेनेंट, rectangle, so on and so forth, and it is giving a breakout. So it is essentially a continuation of the prior trend. Candlestick patterns will tell you when the trend is getting over for the time being, when the trend is pausing for some time. ठीक है? Overbought levels, oversold levels पे candlestick patterns work best for reversal catching. ठीक है? Once you understand how to read the chart, या तो आप चार्ट पैटर्न समझो, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स ढूंढ रहे हो. लाइक वन ऑफ आवर फ्रेंड्स इन द ग्रुप टुडे pointed out towards the possibility of a head and shoulders or an inverted head and shoulders, which is a bullish chart pattern in the making in Nifty 50. ठीक है? We kind of agreed with him कि हाँ थोड़ा उस तरह का एक visually वैसा दिख रहा है. So this is a chart pattern. Now when there is a chart pattern, there is a certain methodology to trade it. कि भाई neckline है, neckline को तोड़ता है तो then you go long or short when the neckline is broken, and you keep the right shoulder or the the last shoulder low or the last shoulder high, as the case may be. If it is inverted, it will be the low, will be your stop loss. तो इस तरह से आप उसको ट्रेड करते हो. इन द बॉडी का शोल्डर टू नेकलाइन से लेके हेड के टिप तक जो लेंथ रहता है वो आपका टारगेट होता है. सो एसेंशियली मतलब बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस, बहुत सारा कंटेंट है इसके बारे में. आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग द एंटायर टेक्निकल एनालिसिस इन फोकस टू यू फॉर ऑल ऑफ अस, सो दैट वी नो व्हाट वी आर डूइंग. ठीक है? चार्ट पैटर्न समझ लिया प्राइस एक्शन के तरीके से. अब कैंडलस्टिक पैटर्न में हम लोग रिवर्सल पैटर्न्स ढूंढ रहे हैं, राइट? सिंगल कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 3-4 कैंडल में रिवर्सल पैटर्न्स बनते हैं. मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, 3 ब्लैक सोल्जर्स, 3 व्हाइट सोल्जर्स, बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स हैं. स्टीव निसन की एक बहुत फेमस बुक है, जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स, या मार्कोविट्स बुलोस्की की भी एक बुक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं. एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट वेरियस
candlestick and chart patterns available in the market or which the charts form. इसमें और भी टेक्निकली और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स होते हैं, हार्मोनिक्स, वो हम लोग उसमें अभी नहीं जाएंगे. मोटा मोटी चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स आप समझो. नाउ पैटर्न्स के बेसिस पे आप ट्रेड बना सकते हो कि भाई आपको बुलिश ब्रेकआउट दिख रहा है, बेरिश ब्रेकआउट दिख रहा है, फ्लैग ब्रेकआउट दिख रहा है, हेड एंड शोल्डर्स ब्रेकआउट दिख रहा है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, और रेक्टेंगल ब्रेकआउट दिख रहा है, जो भी है, दीज आर कैंडलस्टिक पैटर्न्स. एंड इसके साथ आप वॉल्यूम्स को ऐड करते हो. सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस में दो ही चीज है, प्राइस एंड वॉल्यूम. तो प्राइस को आप रीड करते हो चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू रीड करोगे, ब्रेकआउट आएगा, आप ट्रेड करोगे सपोर्टिंग वॉल्यूम्स के साथ. सिंपल. नाउ अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न विच इज मोर विजुअल इन नेचर, suppose you don't know all this and you want to go a little more क्या बोलेंगे उसको, a little more system driven. So how will you design a system? So we are here to understand one such system, which is momentum system. Now momentum system is one of the more popular ones because it is a trend following system, b momentum is inbuilt into it. मतलब you are going along with the trend and देखो, one car is moving, this is point A, this is point B. Let's say Agra to let's say Bombay, for want of a better word, A to B करने के हिसाब से, right? Car A at 60 kilometers moving this side, car B at 100 kilometers moving this side. Which one has more momentum? दोनों का ट्रेंड सेम है, A to B है, right? Let's say this is A, let's say this is B. A to B is the trend, but who has stronger momentum? Is it car A or is it car B? The answer is fairly simple, elementary. It is car B because इसका momentum is 100. So when we try to understand this, we try to say, इसको अगर मैं चार्ट लैंग्वेज में, इसको अगर मैं ट्रेडिंग की भाषा में बोलूं, मेरे को मोमेंटम पकड़ना है, तो आई विल ट्राई एंड कैच एन ऑलरेडी ट्रेंडिंग स्टॉक जहां पे मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, जहां पे कुछ इमीडिएट एक्शन मिलने के चांसेस मिलेंगे. आर बी क्लियर? ओके, आई थिंक आई हैव डिलीटेड एवरीथिंग. लेट मी जस्ट डिलीट दिस. ओके, नाउ for that what we will do is we have to catch the trend. Okay, we have to trade in those stocks which are already showing uptrend because we want to, let's say we are trying to build a bullish momentum strategy. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी स्टॉक ऐसा लेंगे जो मूविंग एवरेज के ऊपर हो या सुपर ट्रेंड के ऊपर हो, ठीक है, और सम ऑफ दी अदर ट्रेंड फॉलोइंग कंफर्मेशन टूल्स. नाउ मोमेंटम विल बी अवर सिग्नल. अभी क्या है, व्हेन यू ट्रेड दिस यू विल आइदर लुक एट द ट्रेंड, क्रॉसओवर्स देखेंगे आप, या प्योर मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करेंगे जिसमें ये ऑलरेडी एक फिल्टर होगा. सो दिस इज अ हायर लेवल ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम. सिंपल मूविंग एवरेज देखोगे जहां पे मोमेंटम आप नहीं कैच करोगे. आप मूविंग एवरेज देखोगे या यू विल से ओके द ट्रेंड शुड ऑलरेडी बी एस्टैब्लिश्ड, along with that I want to catch when it is gaining momentum. So you are doing an hybrid model, you are doing an advanced model. All right, so you know the role of a trend indicator, you know the role of a momentum indicator. Volatility indicator or volume indicator का क्या role है, right? So this should already be, let me put it in different color. This should be the role is, this is the signal to take a trade. This is your, it should be established. So इसका क्या है, ये पहले कंफर्मेशन कर देता है कि of trend, signal to enter trade. Okay, what is the role of volatility? Can you again use bands also to enter the trade, or ATR or TR, true range? No. Let's say we use bands, or let's say we use ATR. The role of ATR is very, very clear. This is to do position sizing and stop loss. You need to know where to keep a scientific stop loss because every stock has a different
वॉलेटिलिटी इनबिल्ट इनटू इट्स नेचर। ठीक है, कोई 1% से मूव होता है डेली का वॉलेटिलिटी, कोई 4% से डेली वॉलेटिलिटी से मूव होता है। सो अगर आपने एक स्टैंडर्ड 5%, 3%, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई मैं मेरा ब्रेकआउट आता है, मैं स्टैंडर्ड 5% का स्टॉप लॉस रख के चलता हूँ, that may work, but that very scientific? The answer is no. You need to understand the volatility of that particular stock. भाई वो स्टॉक शायद 3% से मूवमेंट करता है, तो आपका 5% का स्टॉप लॉस एक्चुअली बहुत बड़ा है। कोई दूसरा स्टॉक है जो 6-7% का वॉलेटिलिटी दिखाता है, तो आपका 5% का स्टॉप लॉस इज प्रोन टू whipsaw. So you need to be aware of these factors. That ATR as an indicator solves it naturally. So you will use it for position sizing and stop loss. Okay, volume is secondary confirmation. Okay, I could also call this as primary filter कि भाई I want a signal, I want a entry signal in only those stocks which have an established prior trend. ठीक है, तो ये वो काम करता है। Price should be above that moving average or above a super trend. Okay, or ADX should be above 20, 25, whatever. And I will use a momentum signal like a MACD crossover. I will use the volatility bands like an ATR to filter out or to assess my stop loss. Let us take an example. Okay, how do you proceed this? How do you do this? So in TradingView, even in a free account, you can simply go to my tab, new tab, and create a screener. Under screener, stocks. Okay, there are multiple other softwares also, but TradingView has a very nice integration with Upstox Pro, okay, in which you can use TradingView. So I'm trying to show a familiar, more familiar software. Now, in this, what will you do? See, what I have done is I have already created a simple screener for all of you, just to understand whether this will, how this looks like. So what we are trying to do, price should be, okay, positive price action, ADX should be greater than 2025. This is the MACD signal, the momentum signal, and there should be some bit of strong volumes. Let's look at a couple of charts. Let's look at a positive price action in, let's say, Axis Bank. Again, no recommendation or anything. We are just trying to create a trading system, how we can use that. And can we use that on any time frame? Definitely, you can use it on any time frame. Higher time frames will give you more cleaner signals, will give you better, a bigger, it will give you cleaner signals, but also larger percentage, stop loss and targets. So just be aware of that aspect. So which was the stock we were looking at? Okay, it has given access. On the daily time frame, I have this built in. Okay, so what is it trying to tell me? Let me just show this to you. So my primary filter was that the stock should be in an uptrend, which was defined by price moving above or trading above any moving average. Okay, I have taken a simple 20 period, 21 period moving average since I look at positional and swing trades. So 21 moving average के ऊपर चल रहा है price. Yes. Now my primary signal generator should be that there should be a moving average MACD crossover, so that it is picking up fresh momentum. Okay, and whether there is enough strength in that momentum or not is classified by ADX moving at 43. So ADX above 25 is strong enough, right? Now, what are the other things? I have also set up an ATR of roughly 20 rupees. So what does this tell me? Axis Bank on a daily basis can move up or down by
20 rupees approximately, right? That is its natural volatility. So if I want to keep a stop loss, my stop loss in point terms will be at least 20 rupees, if not more. क्योंकि वो इंट्राडे की जो वॉलेटिलिटी है ना वो कैप्चर करता है, उसके बाहर हमको बैठना है ताकि हमारा स्टॉप लॉस whipsaw ना हो. Doing so, you will be secure, and once you have set up a 20 rupees ka stop loss, given the ATR is 20 rupees. If you are a 1:1 trader, a short-term trader, you will have a 20 rupee target also. If you are a 2:1 trader, you will have a 40 rupees ka target. It is as simple as that. Okay? So this is your primary filter. This will be your signal generator. You will check for strong volumes. देखो volumes अच्छा खासा है. Last few days has been above average. This is a live candle volume, so it is still not closed. The day is still not closed, so we will not be able to comment on a live candle. But it is giving this kind of a signal today. So if you want to enter basis this kind of a momentum trading strategy, आप क्या करोगे? आप ATR के basis पे अपना stop loss लगाओगे. ठीक है, सिग्नल आपका क्लियर है कि अप ट्रेंडिंग स्टॉक है बिकॉज इट इज अबाउट द मूविंग एवरेज. देन यू हैव गॉट अ मोमेंटम सिग्नल एज पर MACD. okay, you can use MACD, you can use RSI crossing 60, any of those signals you can use, any momentum based signals. okay, तो सब अलग अलग स्टॉक्स मिलेंगे बट एसेंशियल मेकअप ऑफ दो स्टॉक्स विल बी ऑन द बुलिश साइड. प्राइस एक्शन देख लिया, अच्छा लग रहा है, कोई रेजिस्टेंस के पास नहीं है. ठीक है, एंड फाइनली यू विल यूज ATR टू सेट अप योर appropriate stop loss. Basis that you will set up your targets. This is how you would set up a momentum setup. So you can go to 1 hour, you can go to 15 minutes, it's completely up to you. But instead of going to 1 hour, which will be my final point here, you should look for 75 minutes rather than 1 hour. Why will you look for 75 minutes and not 1 hour? What is the reason? 75 minutes. Why 75 minutes and not 1 hour? Why? Because the markets are open from 9:15 till 3:30. Okay. Now, since the markets are open from 9:15 till 3:30, okay, the live markets, you get 75 minutes into 5 equal candles. Correct? You get equal full 75-minute candles. Understood? If you do a 60-minute time frame, last candle is of 15 minutes only. Are we clear? So I'll show you the example here. So let's say this is 75 minutes, right? This is our 75-minute candle. And let me remove that interval, okay? And this is which? Nifty, right? Nifty. Now instead of 1 hour, I'll make 60 minutes. Okay? So this is the 60-minute candle for Nifty. This is the 75-minute candle for Nifty. Now, कल की closing देखते हैं. Yesterday's closing, can you, this is 14th November closing. Can you all see this small candle started at 3:15. That means it is a 15-minute candle. This is the hourly chart. Whereas, see, this is your 15-minute candle, which is like a red spot. Actually, आप अगर ये candle देखो, this is that full candle. 2:15 को ये candle चालू हुआ और 3:30 बजे, which is full 75 minutes को close हुआ. So this tells you the full story कि the market ended on a bullish note, not on a price correction note. Are we clear? तो दोनों कैंडल में इतना डिफरेंस दिख जाता है.
I hope you got this. This is your 75-minute candle. And this is your 15-minute candle in 1 hour time frame. Are we clear? So you get incomplete information. I hope this point is clear for everybody. Why you should use a 75-minute candle, especially in the Indian equity markets, and not the hourly candle. राइट सो आपका क्या है वो आउटलुक चेंज हो जाता है. आप बोलोगे यार लास्ट की कैंडल इतनी छोटी थी, नेगेटिव आया क्या मार्केट? द आंसर इज नो. That is a incomplete candle. If you actually look at the full bodied candle, full 75 minutes, the closing was very strong. It nearly closed the day high. तो यार आपका आउटलुक ही चेंज हो जाता है कि यार मार्केट शायद थोड़ा करेक्शन दे रहा है. नहीं, करेक्शन कुछ नहीं दे रहा है, मार्केट ऊपर ही जा रहा है. समझ रहे हो? तो ये डिफरेंस ऑफ मतलब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. एंड सिमिलरली आपका वॉल्यूम्स भी पूरा कैप्चर नहीं आता बिकॉज वो सिर्फ 15 मिनट का वॉल्यूम दिखाएगा. Are we clear in this? I hope everybody was clear in all the discussions that we have had. I hope the session was good, informative. We will do these kind of quick 1 hourly sessions in which we will look at the markets from a broad perspective. We will look at some topical discussion which will help us become better technical traders. And all questions, all comments, suggestions are more than welcome. आप लोग बताइए आपको और क्या सीखना है, क्या समझना है in these sessions with me and other instructors like me who will come on this platform and try to create this ecosystem of solid good content around technical analysis and trading. So thank you very much, and I will hope to see you all in my next session, and we will then continue these kind of discussions on hand. Till then, take care. Bye bye.